तो आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल भागवत ने अपनी बात रखते हुए 75 वर्ष में राजनीति से संन्यास लेने की अटकलों को खारिज कर दिया, क्योंकि कहा जाता रहा है कि बीजेपी और आरएसएस में नेताओं की 75 वर्ष के बाद सक्रियता खत्म हो जाती है। भागवत ने कहा कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाऊंगा या फिर किसी को 75 साल की उम्र में रिटायर होना चाहिए। हम वही करेंगे जो संघ कहेगा। पहले तो आप सुनिए क्या कुछ कहा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। बाकी 75 साल की बात है तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। He was so witty that his witticisms made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivaha Seshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है उनका। उनके चरित्र का, his biography was inaugurated in Nagpur in English, and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks. We are given a job, whether we want it or not. So if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalak? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time, they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life. And we are ready to work as long as Sangha wants us to work. तो सुना आपने। और भागवत का ये बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में 74 वर्ष के हो चुके हैं और 2026 में 75 वर्ष के हो जाएंगे। बीजेपी और आरएसएस में यह धारणा रही है कि 75 वर्ष की उम्र के बाद नेता सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं और इसका उदाहरण है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता, जिनमें ये उदाहरण देखा जा सकता है। लेकिन भागवत के इस बयान को अगर संकेत के तौर पर देखा जाए तो यह इस बात की ओर इशारा कर सकता है कि पीएम मोदी के लिए 75 वर्ष की सीमा बाध्यकारी नहीं होगी। यानी कि अगर संघ का मार्गदर्शन रहेगा तो पीएम मोदी 2026 के बाद भी सक्रिय राजनीति कर सकते हैं।